All right. So this is your one velocity tangent, and this is your another velocity which is also tangent. So whatever directional changes happened in this uniform circle, directional change of v, that has brought the necessary centripetal acceleration. So that acceleration which has come because of changing direction. So vector of the constant velocity in magnitude final at any point minus initial, and if you divide it by the time taken will give you in magnitude both are v, so v square by r if you see the magnitude of this. Okay, so you have to, and the direction of that is always towards the center, towards the center of the circle, wherever you are, Hmm. irrespective of what point you are on. You, if you're here, your direction remains unchanged, always towards the center. Clear? This is something you have to understand first. Then let's talk about the concept of angular. Okay, the concept of angular acceleration. Okay, so if you are in a circular motion, there are two situations. एक situation तो ये होगी कि आपका जो circular motion में one situation was you were moving with uniform circular tangential velocity, and the change in the direction of uniform velocity produces what is called as a centripetal acceleration directed towards the center. This part is clear? Hmm. Now assume a situation where your omega keeps on changing. Okay, which means the body rotates, but the rate at which rotates keeps on changing. So omega, for example, is increasing, right? So we're saying that omega increases as the time increases. So which means you have, for example, in dt time, the change in omega, which is your angular velocity, which was constant throughout, now that velocity is increasing, which means the particle is moving with a faster angular velocity. Okay, so this quantity, the rate of change of angular velocity. So you were earlier moving with angular velocity of 2 radians per second. Now your new velocity becomes 4 radians per second. Alright, so this is 2 radian per second. And now your so the change in your velocity is omega final minus omega initial is equal to 4 minus 2 is equal to 2 radians per second. Delta t, for example, the time it took to make this change was 0.5 second. So alpha, which is the angular acceleration, is given by d omega by dt is equal to omega final minus omega initial upon tf minus t initial is equal to 2 divided by 0.5 is equal to 4 radians per second square. So there is a situation when there is a rate of change of angle, which means the body which is moving also exhibits an increase of omega. So far what we've done was omega was constant. A body is there, it moves with 2 radians per second. Nothing was happening. But if you apply a torque to the body, which means you apply external rotational force, you can increase the speed of rotation. The body will start rotating with higher angular speed. So in 1 second, it will cover more angle. Tell me if this made sense. Yes, sir. Right, so this is called alpha, and this is the way to write is alpha can be written as
d omega by dt, and can also be written as, because omega is equal to d theta by dt, so it can be written as double derivative of dt square. So if you're given a equation which is theta is equal to 3t cube minus 2t square plus 5t plus 6, and you're asked to calculate the angular velocity omega at t is equal to maybe 1 second. Okay, so you can say d theta by dt is equal to 9t square minus 4t plus 5. Put the value of t is equal to 1. You get 9 into 1 minus 4 into 1 plus 5 is equal to 5 plus 5 is equal to 10 radians per second. If you put t is equal to, next question, find alpha at t is equal to 1 second. So you found this derivative, find the second derivative, okay, because you've already calculated omega. So expression of omega is given to be 9t square minus 4t plus 5, and d omega by dt is equal to 18 minus 4, and this is alpha, angular, 18t. Put the value of t is equal to 1. 18 minus 4 is equal to 14 radians per second square. Right, so the body also, you can see, if I use v is equal to omega r, because omega itself is a variable, keeps on changing, so your linear velocity is no longer constant, which was tangent to the circle. It keeps on varying as per the time. So this is not a case of uniform circular motion. This is a case of a circular motion where even the angular acceleration is a variable. So you can study, when you study omega, this alpha, you have three situations. When alpha is equal to 0, which means your omega remains constant, your angular velocity, then omega is a constant. So omega final is given by omega initial plus alpha t. V is equal to u plus at for constant acceleration. And when omega is variable, right, then you have to apply the rule of calculus. So if you have a situation of no omega, no alpha, this is what we have already studied. There is no Hmm. angular acceleration, so omega initial is equal to omega final, uniform motion. Okay, so the rules you apply to a uniformly accelerated motions are v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as, s is equal to ut plus half at square. So omega final is equal to omega initial plus alpha t. Omega final square minus omega I square is equal to 2 alpha theta. Theta is equal to omega initial into t plus half alpha t square. So you can see we have three equations of motion for uniform accelerated motion, which is linear motion. Hmm. Same equations can be applied. Velocity is now omega f, u is omega I, acceleration is alpha. This is the only difference between the two. So what we are studying is the kinematics of angular motion. Okay. The ठीक है. condition where alpha is a constant, alpha is uniformly accelerated or decelerated situation, Okay, sir. which means in every 1 second it will gain some angular velocity, or in every 1 second it will lose same amount of angular velocity. Hmm. Okay. So let's talk about one more quantity, which is the concept of tangential acceleration. Okay, tangential acceleration. Okay, if you see in the case of a tangential acceleration,
let me just draw the circle so that we can discuss it. So that's, look at this. This is a circular motion and it's not uniform. So यहाँ पे you have a velocity, and this velocity then not only undergoes a change in direction but also undergoes a change in the magnitude. So it was earlier 4 meter per second. It is tangential, but now the value has become 6 meter. In the Hmm. previous examples we studied, most of the time the velocity was tangential but remained constant in magnitude. Not Correct. now. So the velocity is v1, the second velocity vector is v2. So it is different in magnitude and direction both. Okay, so you have to find the resultant of these two, for example. So the way to solve this is you will draw a, if you complete the triangle for this. Okay, so if I draw a velocity vector which is this. Okay, wait, so they made it reverse. This is your velocity vector, and you have to calculate v2 minus v1, which is what is the change in v2 minus v1 vectorially. Now the magnitudes are not same, magnitudes are different. Okay, so if you do this, you will and do a rate of change of this, which means the acceleration due to change in the velocity, okay, delta t a. This is known as tangential acceleration. So velocity vector has changed not only because of the magnetic direction, which was the case earlier and gave you v square by r, but now the velocity vector has undergone a magnitude change also. So one more acceleration has come into picture called as the tangential acceleration, which is in this direction. It is tangent to the circle. Tangential acceleration is in the direction of tangent to the circle. So it'll look like this. If you have to find the tangential acceleration here, draw a tangent. ठीक है. Tangential acceleration. Tell me, what is a radial acceleration? Radial, which acceleration is along the radius? Centripetal, Hmm. right? It is in this direction, right? Yes, sir. Towards the center. Which acceleration is tangent to the circle? Tangential. हाँ. What is the source of tangential acceleration? What is the source of tangential acceleration? What gives rise to tangential acceleration? No idea? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आती कैसे है? नहीं आता? नहीं सर. अभी तो बोला है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी पहले और फिर वो बदल के 6 हो गई, तो डायरेक्शन तो बदली है, ये नहीं, दिस इज द न्यू डायरेक्शन, Hmm. बट द मैग्नीट्यूड हैज आल्सो चेंज्ड, v1 से v2 हो गया. Yes, sir. सिर्फ अगर डायरेक्शन चेंज होगी
तो क्या निकलेगा? इफ देर इज ओनली चेंज इन डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, तो विच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड? tangential. Centripetal acceleration, radial. अच्छा. If in a circular motion the velocity magnitude remains same, which means it's a uniform case, the direction only changes, which it will because it is a tangent to the circle, then it produces a centripetal acceleration. But if apart from direction the magnitude of the velocity also changes, it produces AT, the tangential acceleration. हम्म. पूछ सकते हो दोबारा, नहीं समझ में आ रहा तो. नहीं सही. Okay. And what is the angular acceleration? How do you find angular acceleration? What is angular acceleration? No idea? मतलब मेरे को फॉर्मूला याद है. The rate of change of angular velocity. हाँ, डेफिनेटली. You seem to be very tired today. नहीं. Okay. Alright, so write all the formulas you know by now. You write it. Summarize what you learned yesterday and today. All the formulas. Summarize all the formulas you have memorized today. You can write down anywhere you want to, below the circle. हाँ जी, समरी लिख दी. नहीं अभी. Tell me if you're finding any difficulty, you can say that. You don't have to worry.
What is this R2 minus R1? आर पर मैंने वो रेडियस V2 लिखा. Yes, be very careful. Okay, fair enough. बढ़िया. Just write here C. A C here. Centripetal. ठीक ठीक है. है. चलेगा. This is the most crucial part of your JEE mains. ओके. The tangential, जहाँ पे velocity, magnitude और direction दोनों में बदल गई. Most important. Done. यस सर. Please also write the situation of uniform angularly accelerated motion. तीन इक्वेशन जो यूनिफॉर्म में होती हैं. So this is your angular, sorry, angular acceleration ने निकली लिखी. ठीक अच्छा है. लिख दिए, sorry, angular acceleration, tangential acceleration, centripetal acceleration. और भी तो सीखे हैं यार. What about velocity is equal to omega r? Omega is equal to d theta by dt. यस सर. We learned these also. So we can put the value of and omega is equal to 2 pi by d or theta upon d. And if you notice in a circle, if you have a tangential velocity and a velocity towards the, so this, for example, this is your AT and this is your centripetal. So these are at right angles to each other, by the way. यस सर. So you can find a resultant for them also, which is, so if you are in a circular motion with the tangential acceleration and centripetal, there is a resultant acceleration. So the same body is also getting a tangential acceleration and the same body is also facing a centripetal acceleration. So there, it has a resultant which is a resultant of the two vectors tangential and this. Got it? So the most important one you have studied is just now. Okay. Tangential acceleration, you can expect questions from. Okay, let's say.
So I will do a quiz with you now so that we are very clear that you have understood each one of the concepts. Okay, let's do some quiz. I think उससे थोड़ा सा okay. So let me ask you a question from this chapter. Okay, so let's say you have a situation where you are given that the body is moving with a linear velocity, which is given by v is equal to. Let's move to the next page. Thing is king gayi. So v is equal to 2t square. A body obeys this type of motion. ठीक है? You have to find first the tangential acceleration. The body is in circular motion, okay? And the radius of the circle is 3 centimeter. You have to find the tangential acceleration at t is equal to 1 second. And then you have to find the resultant acceleration when t is equal to 1 second. Find both. Hmm. The equation that describes the motion is this. You can go back and check the formulas if you want to. That is allowed. First step, tangential acceleration. If you know the source of tangential acceleration, why it comes up, if I see your formula, the tangential acceleration came because of the change of the velocity of the circle in magnitude and direction both. Right? So it is essentially coming because of change in the velocity. So it is basically dv by dt, which is because of the magnitude change.
not the direction. If it is because of direction, you get this. If it is because of the magnitude, डायरेक्शन तो होगी होगी, उसकी वजह से तो ये आ ही गया. बट अगर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सर्कल में चेंज होगा थ्रू आउट द सर्कल, देन यू हैव टू यूज टेंजेंशियल. तो आप देखो यहाँ पे, यस सही है. टी इज इक्वल टू 1 डाल दो, ए टी आ गया. वेरी नाइस, गुड जॉब डन. सेकंड पार्ट क्या लिखा सर आपने? रिजल्टेंट निकालना है. दोनों एक्सेलरेशन जो लग रही है, एक तो सेंटर पे लग रही है बिकॉज ऑफ नॉर्मल. एक रेडियल लग रही है. एग्जैक्टली. If you put in some extra labor, na, हम्म. more labor, which is pending, we could have gone towards advanced also, JEE advanced. But अभी थोड़ी वो overkill हो जाएगी. हम्म. So this is, what is this AM? ये आर है. Oh, no problem हो गया. Fair enough. So this is tangent to the circle, then t is equal to 1 डाल दिया, आंसर. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, स्क्वायर तो 4 ही आ गया, तो रिजल्टेंट बहुत बढ़िया. 4 ही है. You have to find the resultant of both. हम्म. The resultant. So they're acting at right angles. एक tangential है, एक radial है. यस सर. Find the resultant. So one is at any point, the one is tangential, the other is radial. Or I can pick this and draw a proper vector of this. You ordered the latest copy or 2024 ही करें. अच्छा कर लिया. कहाँ से मिली वो? Amazon. ओके, बढ़िया. निकल गया रिजल्टेंट. नहीं, इसमें पाइथागोरस, दो राइट एंगल वेलोसिटी. पे. अच्छा ठीक है, ठीक पाइथागोरस यार, मतलब व्हाट्स अ बिग डील.
लेकिन इसमें ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा? बन रहा है. Instantaneous you found ना. At that instant you have two accelerations. So one is tangential, one is central. Both are at right angle. Tangent is always perpendicular to the रेडियस। radius. सही जा रहे हो? लेकिन अ, Hmm. So जब which means इधर we are saying 90 this one, right? We are saying you're asking direction or you're asking something else. मैं Net is ये this. ट्रायंगल समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ये ठीक है, ठीक ये रहा ना AT and AC. ठीक। वैसे तो ये रिजल्टेंट आ गया ना आपका. हम्म। It should be in this direction. This may not be in the direction I have drawn. Basically, let me just rub it off and show you the direction, which is more important. So let me draw the direction. So आपका ये, this is your tangential. हम्म। Okay, and let me just remove this. So law of parallelogram लगा रहा हूँ मैं इस पे. If I apply a law of parallelogram on this, then the direction of vector is this. This is a direction. Net acceleration का direction, resultant का हम्म। magnitude, Pythagoras. यस सर। My coffee is so bitter now, I can't drink it. दूध डलवा के लाता हूँ. इसमें बर्फ डलवा लेता हूँ, रुको. हाँ जी, डन. 4 square plus 4 square, right? Resultant 4 square plus 4 square. यस सर। ठीक है. Under root of 32, 4 root 2 meter per second square. हाँ Okay, do this one. हाँ ठीक है, do this one now. छोड़ दो उसको. ठीक, ठीक है। हो गया. This is a JEE question 2022. हम्म।
करेक्ट है. So you know triangle, okay, and you know it's an isosceles triangle by the way, because Hmm. दो तो radius है इसके अंदर. Yes, sir. If you know this angle, you can find this angle also. 180 minus balance 45 divided by 2 122.5 हो गया. divided by 2. हाँ हाँ, 22.5. ठीक है 22.5. ठीक है. तो you know the three angles, you know the length of the arc which it has covered. वो length of the arc भी मालूम है. 60 meters distance है ना, Hmm. तो आर्क की लेंथ भी मालूम है. अब ट्राइंगल के अंदर वो आर्क लेंथ का कोई यूज नहीं हुआ ना अभी तक. नहीं. मैंने लेफ्ट पे ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने बताया था. Hmm. सो आर्क इज नोन टू यू राइट. Yes, sir. थीटा इज थीटा ऑल्सो नोन. पता है. निकाल. समझ गया ट्रिक. Hmm. बेसिक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल. आई थिंक वंस यू नो द रेडियस, then you have to just do everything inside the triangle, because दो साइड तो मालूम चली गई ना रेडियस. Hmm. And one angle is also known, the two other angle also is known. तो आपको लेंथ ऑफ वो निकालनी है. सो यू हैव टू AB. अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. Hmm. ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. हाउएवर कॉस एंड हीरोज फॉर्मूला वगैरह पढ़े थे. नहीं, याद ये है? सब तो डिलीट हो गया था. भूल गए. नहीं, ये डिलीटेड था सिलेबस से. ओके. In a triangle, if sides are known and angles are known, how are they related to each other? अब तो वही रह गया ना सिर्फ कि you know two sides, three angles. Hmm. That is what you need. You're given.
हाँ जी, where are you stuck now? चलो, do next one. Let me share the formula with you. Understood. ये trigonometry में होता है जो which you're doing. हम्म, There's a direct rule. If you know the sides and the angles, you can link them. Look at this formula. ये formula देख लो. हम्म, If you have a triangle, this triangle, दिख रहा है? So yes sir. see the three sides. These are the length of the triangle. ठीक है? ये length of the triangle है. हम्म, और correspondingly उनके सामने जो angle है वो ये है. So if you have to find c square for example, okay? हम्म, Length. This is the length. ये lengths है. This is the rule you have to apply. If you have to find c, so आपके केस के अंदर c is the displacement you're finding, right? correct. The other two are radius. हम्म, And what is the angle opposite to the displacement? Cos of 135. so 2r square minus 2r square cos of 90 plus 45. Sine 45 is 1 by root 2. Radius is also known to you now. समझ आ गया? ये law of Yes. cosine is a very important property for you. And this law is applicable to all. अगर आपको a निकालना है, a, then write a square here and then a square plus c square here minus 2ac cos of b. सबके लिए हम्म, एप्लीकेबल है ये, सिर्फ सी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सी के सामने अगर आपको बी की लेंथ भी निकालनी है तो जस्ट चेंज कर दो, सी को बी कर दो और एंगल को भी बी कर दो और यहाँ पे ए और सी लगा दो अगर आप बी निकाल रहे हो तो. दिस कैन बी डन यूनिफॉर्मली ऑल अक्रॉस द ट्राइंगल. सो इफ सी हम्म, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab and the angle between a and b, then length of b square can also be found out. I hope it is clear. yes sir. तीनों अलाउड है. हम्म,
ठीक है जी, नेक्स्ट डू दिस वन। ठीक है। ये वाला, ये जेई मीन्स। And you can see for yourself the level of even JEE mains. So you have the formula list with you, which you had written. First thing, see which one is, and the word uniform is very good. So alpha at least is fixed. Angularly, it will move through the same angle. ये तो linear motion के हो गए ना। अच्छा, you will convert it। यस। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अच्छा, so you're writing theta. Theta is equal to, समझ गया मैं what you're doing, okay, not bad.
15 है सर आंसर। 20। नहीं 15। ओके, बड़ी फास्ट कर लिया तुमने ये। ये सर इजी सा था ये वाला। ओके, नॉट बैड यार। हम्म, वेरी वेरी गुड, नॉट बैड नहीं, वेरी गुड। दिख गई क्या स्टैंडर्ड है। यस सर। कितनी हाई तौबा मची हुई है। हम्म। क्या बोलते थे तुम, हाँ। मुझसे नहीं होगा। तुमने देखा और उसको उड़ा दिया यस सर। उसको। दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतना मतलब। ऑलराइट, लेट मी गिव यू विद। ओके, सो let's take our question. Okay, so you have this. Okay, let me see if I can pick out some. Wait, is okay. Hmm. This looks next. Question number sixth. हम्म।
Oh, this is resultant acceleration, right? Hmm. V is the uniform speed. Okay, so V square by R तो centripetal आ जाती है ना. On the circular motion, path of radius is measured. X is V is the uniform speed. Okay, so if you have a circle, draw a circle. Sorry. All right. And acceleration at any point is known to you. You have to find the. It's a uniform circular motion. So V is changing in direction but not in magnitude. ठीक है. So you have to break down the velocity in. तो acceleration इसकी कौन सी होगी? Tangential होगी या सिर्फ centripetal? It's a uniform circular motion. Magnitude change नहीं हो रहा velocity का. टेंजेंशियल के लिए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए ना, dv by dt. इसमें क्या लिखा है इसने? यूनिफॉर्म है ना. Yes, sir. सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल? ओनली ए क्यू ही सिर्फ सेंट्रीपिटल, हाँ, correct. और होगे भी नहीं कुछ. Hmm. सो हाउ डू यू? सो ही सेइंग ब्रेक इट डाउन इनटू टू पार्ट्स, y and the other is x vector. Hmm. So if this your velocity is v square by r towards the center, v square by r towards the center, split it into two parts, x and y, if the angle is known to you. किसी जगह पे इसका एंगल मालूम था, थीटा, right? It is making an angle theta at that point. ये एंगल आपको मालूम है थीटा है. तो इसके दो हिस्से बना लिए, दैट्स ऑल. Hmm. एक्स और वाई में तोड़ दिया ना वेलोसिटी को. Yes, sir. तोड़ दिए लो. So theta is known, hypotenuse is known. So if you draw the complete diagram, how will it look? It will look like, so this is your, the two components are these and this. So नीचे वाला component हो गया minus v square by r j, और ये वाला component कौन सा हो गया? It was just breaking the two into two parts, right? So ये थीटा है तो साथ में, सॉरी, इसका जो ये वाला बेस है, बेस इज माइनस, राइट? तो बेस के साथ लिखोगे cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मालूम है, एंगल भी मालूम है, तो परपेंडिकुलर विल बी v स्क्वायर sin थीटा. सो माइनस v स्क्वायर बाय r cos थीटा, I minus v square by r sin theta j is the answer. सेंट्रीपिटल फोर्स को बेसिकली आई और जे में तोड़ दिया इसने. टेल मी इफ इट वाज टफ. इट वाजंट, राइट? थोड़ा सा वेक्टोरियली अगर सोचे बंदा तो डूएबल है. नहीं? Yes, sir. ओके. All right. So let's say, let me give you one more question on this. Circular motion.
Okay. All right. This is not a very tough question, but you have to be thinking. That's all. हम्म You also got up now? नहीं मेरे को तो देर हो गई वैसे देर हो गई थी. Okay. There you go. Small questions. If you do, it'll हम्म give you more. Okay. हम्म You can go to the list of formulas we created. Allowed hai. On the first page. Let me go to the first page. Yes. मैं कॉपी कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है Wait. Sorry. इधर नहीं, इधर पेस्ट करना था मुझे. You can see this. हम्म So friendship with
A part answer. सही है. So very very basic type of question, right? Hmm. But you have to get friendly with this. The only way to do is to practice out questions from circular motion. Okay. You don't have a choice. Okay. Hmm. Now some interesting facts which you have to know. Okay, which are a bit advanced, but so there are certain relationships that we have already written. So one of the most important relation that you have to know is between the tangential acceleration. Okay, the tangential acceleration is also written as alpha, which is a, so this is tangential acceleration, Hmm. which is along the tangent, and how it is linked to alpha. It is given by alpha into t. अच्छा. ठीक है? So you can also calculate using this approach. Okay. Okay. The other thing you have to know is the alpha. एक आपको मालूम होना चाहिए. What is the rule of alpha? AT. Okay. Sorry, alpha into R. Sorry. Okay. So this is the rule, exact rule. So since this is a vector, the vector form of alpha. I don't know. Let me start up another page, okay? So that there is clarity on what we're doing. So A tangential is the vector product of these two. Very important. So if I tell you so this is new, right? Completely new. Hmm. ये नहीं सुना होगा. Totally new है बिल्कुल. So let me just ask you a question on this. Our net speed मेरी पता नहीं, I don't know. It is way too small. Okay, हो गया, थोड़ा सा better हो गया. Oh, थोड़ा you feel confident on projectile now? Hmm. Okay. So you can expect a question on this also. This formula which we have written. पूछा जा सकता है आपसे. Alright, so if I tell you that you have a situation where the velocity of the body, okay, so this is instantaneous velocity of the body, is given by a equation
s raised to power 3 by 2 s है ठीक है. हम्म So s is the distance. You have to find the tangential acceleration in terms of v or s. at निकालना है आपको. So body follows this rule. Velocity at, and this s is the distance, हम्म and this is your velocity. So as the distance changes, the velocity adopts this rule. The question is, what is the value of tangential acceleration? You should know tangential acceleration is the change in the value of velocity, also magnitude, right? So it's change in velocity with respect to time. Normal जो होती है, but tangential है direction में. Centripetal तो v square by r होती है. That is straight. So this is a situation where you're talking about the tangential. So tangential का क्या फॉर्मूला है? देखो दोनों ही केस में लगाना तो एक ही है, dv by dt. The only difference is एक dv by dt सेंट्रीपिटल पैदा करता है जो डायरेक्शन से आता है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज. दूसरे में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. तो हम्म ये वाला मैग्नीट्यूड से जो आता है इसको बोलते हैं at. जो डायरेक्शन से आता है वो आता है ये. और टेंजेंशियल you have seen, right? What you get as a tangential is this basically dv by dt. So if you हम्म take derivative of this from on both the sides, try that. dv by dt निकालो. So this is like y is equal to x raised to power 3 by 2. But derivative is on both the sides with respect to time. हम्म Clear है? So take derivative. जैसे normal लेते हो. हुआ? No? वो पेन नहीं चलता हो गया. ठीक है. 3 by 2. ये
एस एस लिखा हुआ नहीं? हाँ, s is variable, but you're introducing a third variable now. Yes, 3 by 2 minus 1. 1/2. सही है. And ds by dt. थर्ड वेरिएबल आया ना. हम्म सो मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड को dt से लिया ना. correct. ठीक है. सो व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड एस. v तो होता है. हाँ यही होता है। है ना. v लिख दो इसको. सारे को v में ले आओ फिर. सो दिस विल बी 3/2. s यहाँ से आ जाएगा v रेस टू पावर 2/3. हम्म इधर से उल्टा कर देते हैं. रेस टू पावर हाफ into v. So 3/2 v raised to power 1/3 into v. आंसर 8 ही आ गया सारा का सारा v में. ये s था ना, तो मैं s इक्वल टू लिख लिया मैंने इसको. हम्म उल्टा लिख दिया ना. correct. Got it? You understood this? हम्म Okay. So धीरे धीरे you will see, you will develop a good grip. ठीक है। Doesn't take too long to develop a. Okay. Any question you have so far? नहीं You are very tired, speaking very little. Too tired. ये प्रोसेस थकाने वाला है. हम्म It can reduce your. But ठीक है. What is the choice? Okay, so let me give you one more question, and then we will close this topic. Okay? हम्म हो गया फिर ये. Let's look into exercises. Let me just give me 1 second. Let me just forward you something. हाँ जी. So I have something with me which I am forwarding you on your. Have a look at it. टेलीग्राम पे देख लो अपने. हम्म This is your assignment. Please complete all of this. ठीक है। 11 questions. So we will discuss these. हम्म ठीक है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सेंड यू असाइनमेंट्स ऑन द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, एमसीक्यूज वगैरह ना. ठीक है। just complete them for ओके each सर। of the topic. हाँ जी. Can we bring up your question paper of physics now? ठीक है। All right. Let me just open that.
motion in a plane. हाँ जी, खोल दिया मैंने. And let me go to Zoom. ज़्यादातर question was MCQ, right? And ठीक है, I'm there. Let's go to the paper. ये रहा. So first was reasoning and assertion, right? Okay. 2 point charges are separated. Okay. And then the electric field between them is closer. What's your answer? 2 point charges. Serial number 1. First question ये था ना? I'm sorry. 5 to 6. Okay. Let me just remove this bottle. C. Okay. Closer to plus Q. Why? Question number. चलो मुझे बता दो इसमें से क्या नहीं हुआ. I think you're hardly speaking, which is very strange. कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? You can ask me. Let me do that. Question 11. Question 11. There is a point charge kept in the vicinity of an uncharged conducting plate. Okay. Sketch electric field lines between charge and the plate. Okay. So a point charge is kept on the vicinity of an uncharged conducting plate. अच्छा, तो तुमने पोलराइजेशन से उसे वो कर दिया मेटेलिक को. तो पोलराइजेशन दिखाई है तुमने? ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा. ओके. Let me just. Oh, अच्छा, I'm sharing, so I can't write anything. Okay. But I can. No, I can't even do that. Okay. So you have an uncharged conducting plate and you keep a charge in front of it, right? It could be positive or negative. ये लिखा है क्वेश्चन में कहीं पे? क्वेश्चन में था 11th. It's a positive charge, okay? ठीक है. So if it's a positive charge, it's a positive charge, and this is conducting, so it will attract all the negative charge towards it. जो कंडक्टिंग मेटल है उसके नेगेटिव चार्ज उसकी साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके मेटल के अंदर से, और पिछली साइड उसकी पॉजिटिव बन जाएगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज इट. एसेंशियली पोलराइजेशन कर रहे हो आप उसकी. जो मेटल है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्प्लिट करके अलग अलग कर दिया. ठीक है. ओके. और बता दो जी कौन सा. You can also open that. You can tell me. I'll go there. Or you share it and Question. no, screen. ठीक है. I will just. Okay. So you can also share now. You can open. We can discuss the question.
कॉफी पिया करो, कॉफी तब दम आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन 9. Question number 9. Okay, so which of the following is regarding a point? A charge on a body is always given by Q is equal to NE. Yes. By convention, the charge on the electron. Yes. The fact that electric charge is always an integral multiple is a quantization. By quantization, right? The charge Q on a body. Okay, so which is more of, I think मेरे को तो इसमें I'm finding this to be wrong. D. I think it was अच्छा, Coulomb. ठीक. कूलम ने करा था ये काम। ये तो क्वेश्चन थोड़ा वो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, हाँ, वही कंफ्यूज हो गया कुछ था. क्वेश्चन था ही नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन तुमने पहले ही कर रखे होंगे, तुम्हें पता होगा। ये हाउ आर यू एबल टू मूव दिस यार सो फास्ट? इस चीज का ये कैसे मूव कर पा रहे हो तुम सारा तेज तेज इतनी? एरोस. हो गया, मेरी स्पीड नहीं इतनी फिर। हाँ, इसका क्वेश्चन 5. The electric field below shows two lines 2 to 2. Okay, so these are the this is better. Okay, so wherever see uh, the distance between the electric field is high, there the field is weak. So if you notice, A और A के ऊपर जो कर्व है और A के नीचे जो कर्व है और जो C है, सेम सिचुएशन है ऑलमोस्ट. सो टू मी ई ए और ई सी जो है, नहीं ई सी सबसे छोटा लग रहा है एक्चुअली. ई ए और ई सी बराबर लग रहे हैं मुझे, मतलब दोनों का कर्व जो ऊपर नीचे है सेम डिस्टेंस है. सेम से लग रहा है. और ई बी जो है वो सबसे वीक है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बहुत ज्यादा है. सो माय चॉइस विल बी सी. अच्छा, ठीक है. मेक सेंस है ना दोनों तरफ? इसमें कुछ क्वेश्चन थे. एक तो 13 था. 13. The force, if a brass rod is placed, how does the okay, so basically you have to know that the brass is what? Is it a dielectric or is it a metal? बताओ. मेटल होगा. मेटल हो गया ना. तो ये हाँ. जब आप वो करते हो मेटल, ये इंसुलेटर रखते हो तो के टाइम्स हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? एक ही बार आपसे. के बढ़ जाता है ना. हाँ. So instead of insulator, what are you keeping now? You are keeping something else. Instead of an insulator, keeping a metallic rod. So what are the choices you have? चॉइसेस नहीं है इसमें. Okay, you have to explain what happens to the force. देखो, if you keep a metallic plate between the
electric field, right? So the question is electric field, how does the electric field get changed? हम्म, Okay, so to me, the electric field will become discontinuous. अच्छा, भाई आप देखो जहां जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट नजर आएगी या रॉड नजर आएगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी एग्जिस्टिंग. हम्म, आई होप यू रिमेंबर दैट. yes sir, So if you introduce a metallic plate between the two points or a rod for example, at those points you cannot have any uh, it doesn't conduct, right? correct, So if it doesn't conduct, it will, there is no interaction between the two charges. हम्म, So इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा अगर कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकल के उधर जाने ही नहीं देगा. yes sir, So force will become, what will happen to हम्म, the force? यही होगा फिर, है ना? बताओ क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगी उसकी, yes sir, रॉड की. एक रॉड हम्म, का साइड जो पॉजिटिव साइड पे होगा वो चार्ज होके मतलब पोलराइज होके स्प्लिट हो जाएगा. उसके अपने चार्जेस जो हैं नेगेटिव वाले वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो जो उसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव साइड की तरफ चल जाएंगे, हम्म, राइट? सो उस ठीक जगह है, पे wherever they are the electric field will not exist. ठीक है, फोर्स के लिए जो फॉर्मूला चाहिए आपको चाहिए के के क्यू बाय, और तो जो परमिटिविटी ऑफ मेटल होती है वो कितनी होती है? परमिटिविटी ऑफ मेटल इंसुलेटर्स की होती है ना, दे आर मोर इंसुलेटर, बट परमिटिविटी इलेक्ट्रिक मेटल इज नॉट एन इंसुलेटर, मेटल तो कंडक्टर है. हम्म, So the insulating property of a metal is zero. okay, Zero है ना? There is no metallic property it has. हम्म, So what will happen if there is no metal? If a metal has no dielectric in it, it has no dielectric, then what happens? देखो, I'm just writing it, okay? Think in these lines. बस देखिए पोलराइजेशन जब मेटल आता है तो कैसे करते हैं, राइट? Okay, so you have a situation of an electric field which exists. Oh, sorry, these are two point charges. I'm sorry. Okay, and you keep a rod between them, which is a positive rod, right? So जो ये रॉड है इस ये वाला पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा सारा हम्म, पोलराइजेशन से. पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव अपनी तरफ खींच लेगा और ये पीछे क्या छोड़ के आ जाएगा? पॉजिटिव. correct, Right. So you will have an electric field which is positive to negative and positive to negative. But there is a point where there is no electric field. हम्म, But this electric field otherwise, so this is the area where there will be no electric field because of the polarization. So force is given by K Q1 Q2 by R square. K की क्या फॉर्मूले होती है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? सो यही होता है ना K. yes So sir, epsilon R into Q1 Q2 upon, so I think metals epsilon R is 0. हम्म,
has no insulation. So there is no Correct. insulation, there is no force. Hmm. So if you introduce a metallic plate or a metallic rod between the two charges, the metallic plate, sorry, the metallic rod will get polarized, and at that point, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ फोर्स नहीं होगी. Hmm. लेकिन बाकी मीडियम तो एग्जिस्ट करता है ना, Yes, sir. विच मीन्स द मीडियम विच इज द एयर मीडियम बिटवीन द टू. ये थोड़ी सी जगह में डाला, पूरा थोड़ी ना भर दिया. दिस इज एयर, this is also air. So basically this place electric field does not exist inside the rod. Hmm. तो अगर हम फोर्स की बात करें तो इस जगह पे जहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है वहाँ पे इफ यू कीप अ चार्ज इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स. If you keep a charge on the rod, but otherwise if you see the medium remains same on both the sides. So force experienced on the rod is zero, but between the two charges remains unimpacted because the medium is still air, and we are assuming the rod is of infinitely small thickness. कोई thickness नहीं है क्योंकि you can have a situation where you can introduce a, this is the thickness of the rod, it is very thick, Hmm. so it may be half the total distance, but इधर बिल्कुल thin rod मानी है, so makes, to me it makes no difference in the Okay. force. But on the rod, if you have a charge, it will experience nothing. Hmm. Next, poor पूछो. Question 15. Okay. ये tricky question था बड़ा यार. Yes, sir. Kafi. Question number, लेकिन अच्छा, you share it now again. I'm not. Let me just close the. Okay. Wait. ये जो है. Let me see the next question. I'll come back. हाँ बताओ question number. 15. Okay. So linear charge density is not constant. Hmm. The linear charge density is a function of uh, the distance from the end A of the wire, or the, और ये infinite भी नहीं है by the way. Correct. It's not an infinite situation. तो आपको इसके अंदर when it is not infinite, do you know the values to be taken for angle? Wait, let me show you. So let me just read the question. एक वायर है, उसका lambda x है, और वायर इमेजिन दैट द गॉसियन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मतलब गॉस ही लगाना है, बट यू हैव टू अप्लाई. ये तो डेरिवेशन नहीं है लैम्डा की, जो द डेरिवेशन ऑफ लैम्डा बट विद अ डिफरेंस. हाँ, ये कह सकते हैं. हाँ, कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए एंगल क्या लेना है. So Hmm. the only difference is if you have a infinitely charged wire like this versus a finite which has a definitive length, and उसका जो lambda है, how does it vary? क्या लिखा है language exactly? Lambda is kx, Hmm. where kx is measured from a one end. ऐसा लिखा है कुछ?
लिखा है यार, अभी तो देखा था, रुको, मेरे लेट को मी, हाँ लिखा लिखा, ठीक है ठीक है ठीक कुछ लिखा होगा। A lambda is x is measured from one of the end, right? है। तो ठीक है, मैं तो देखो इसको, एंड इट हैज अ गॉसियन सरफेस अराउंड इट, दिस इज इट। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है बेसिकली। सो अगर आप देखो, फाइंड, यू हैव टू फाइंड व्हाट, Expression of electric flux through this surface. ठीक है, तो पहले तो ई निकालना पड़ेगा। हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, k into, so let's assume a very small length of this located at a distance x from the center, so ये हो जाएगा dq, कितना हो जाएगा for a very small length dx, आपने एक छोटी सी लेंथ ली है dx, और उसकी वजह से you're finding here, okay, ये here, so वो हो जाएगा k into lambda into dx, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया फ्रॉम देयर, अगर मैं ये ले लूँ तो इसका डिस्टेंस है टोटल, मैंने ले लिया, मान लो वी आर फाइंडिंग एट अ डिस्टेंस y, और ये कितना हो जाएगा टोटल, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो ये मैं वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ, दिस इज योर डी ई। हम्म I have taken a very small charge here and I'm finding the electric field here due to this small charge, k डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और लैम्डा की क्या वैल्यू है अभी पता है हमें, अच्छा ये के एक और आ गया, तो के को हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, राइट, परमिटिविटी वाले को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा उसके साथ, हम्म लैम्डा की जगह लिख देते हैं के एक्स, और वाई कितना है हमारा, ये जो हमारा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा, राइट, तो वाई स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर विल बी हाउ मच, सो दिस विल बिकम के इंटीग्रल ऑफ, ये क्या है, एक मिनट, चश्मा पहन ही लेता हूँ मैं, के, अच्छा मैंने इसका नाम ए लिख दिया था, के का, परमिटिविटी का, हम्म तो मीडियम है और ये फिक्स्ड है, तो के और ए बाहर चले गए, एक्स डी एक्स बाई वाई स्क्वायर, वेयर वाई इज द एनी पॉइंट वेयर यू नीड टू फाइंड आउट, राइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वाई वेरीज फ्रॉम वेयर, 0 to L, 0 to L, sorry, x varies from 0 to L, so your integral is ka x dx upon y square, y एक जनरल डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्रॉम द, so 0 to L is equal to ka x square by 2 y square, 0 to L is equal to ka L square upon 2y square. This is your expression of electric field due to a finite wire with a variable linear charge density. The linear charge density is varying, right? Normally तो दिया होता है ना लैम्डा, जब ये वाला हम करते हैं तो इसमें लैम्डा क्या दिया होता है, 2 कूलम पर मीटर, correct, लेकिन इसमें लैम्डा इज अ समथिंग विच इज चेंजिंग बाय डिस्टेंस, हम्म तो मैंने इसके अंदर एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, उसकी वजह से मैंने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और ये के नहीं लिखा मैंने क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता, तो माई परमिटिविटी रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक इट इज ए मीडियम विच इज दिस एयर मीडियम, राइट, और ये जो पॉइंट जिस पे मैं निकाल रहा हूँ इट इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द वायर, और जनरल वेरी क्लोज टू वायर, ओके, दिस y, यहाँ पे मैंने लिखा डी ई इज इक्वल टू परमिटिविटी इंटू डी क्यू, तो डी क्यू जो था मेरा, इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज ऑन अ वेरी स्मॉल डी एक्स, तो वो निकल गया मेरा लैम्डा इंटू डी एक्स, हम्म बट लैम्डा खुद भी वेरिएबल है, ऐसा और ऊपर से लैम्डा बढ़ रहा है, देखो अगर यहाँ पे 0 था तो थोड़ी दूर जाके लैम्डा हो गया 2,
फिर हो गया 3 4 3.1 3 so lambda continuously is increasing. So अभी एक x is changing from 0 to L. X is equal to 0 and this is x is equal to L. इंटीग्रेशन हो गई बेसिकली, और क्या हुआ, लैम्डा हम्म, dx हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 2 लिख दिया इसको, और फिर 0 to L डाल दिया आंसर. दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट. ये समझ में आ गया? हाँ, ये वाला। नॉट वेरी हार्ड, बट हाँ थोड़ा सा वो है कि हमें जो रटा रटाया फॉर्मूला है वो तो उसका है, हम्म। इनफाइनाइट का. यस सर, बस यही थे। ओके. वेट, रीजनिंग असर्शन बाकी इजी थे. हाँ, और कुछ क्वेश्चन जो और नहीं थे वो मैंने खुद देख लिए थे कि अच्छा, दिख गए थे. ओके. हाँ, चार्जेस. ओके. ओके. ठीक है, काम करता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ओके। एंड लेट्स डिस्कस. मुझे लगता है, आई थिंक यू यू हैव बिकम प्रीटी प्रोफिशिएंट इन योर अंडरस्टैंडिंग हम्म। एंड योर कॉन्फिडेंस इज आल्सो बेटर. यस। व्हाट डू यू थिंक? हुआ है। ट्रू है. हम्म, All right, so let's look into first physics. Okay, physics, if you notice, you have done electric field. तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कर नहीं रहे, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, नो चैप्टर, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. ये एक्चुअली मेरी केमिस्ट्री क्लास है। वो तो 12:30. अच्छा, ठीक है, लेट्स डू इट इन